Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's newspaper analysis, we'll discuss some important newspaper articles from 12th September 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. The link for the group will be provided in the description below. This is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article is about the urban flooding at Bengaluru. It has been quite in news these days about the recent floods that are taking place in Bengaluru. So even though this topic is based on the news published due to the floods that took place in the tech capital of India, that is Bengaluru, the information derived from this is going to be substantial, especially from the mains perspective. So especially if you see from GS paper 1, geography point of view, as well as from GS paper 2, from disaster management point of view. तो ये दो आइडिया से दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट दिस आर्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस so a number of times we have seen questions being asked from the urban flooding or the flash floods or the artificial floods in the mains, and it is always a good idea to complement your answers with recent examples. So if any such question is being asked in the upcoming times, so make sure to cite examples from Bangalore as well. So urban flooding or artificial flooding, it's the same thing only. So it is basically caused by the poor urban planning, like choking of the drainage system due to pollution. Then urban flooding is an inundation of land and constructed setting, particularly in densely populated areas. So flooding in urban areas is caused by the intense or prolonged rainfall, which overwhelms the capacity of the drainage system. Okay. So urban flooding, as I told you, it is also known as artificial flooding. Okay. So normally क्या होता है, in the cities you will observe that when it rains for some 2 to 3 years continuously, and if waterlogging takes place mostly because of the poor drainage or the urban management, then urban flooding may take place. Okay. So at current times of urbanization, when the rural population is shifting to the urban areas on a massive scale, it is now आपको पता ही है कि अभी migration कितना large scale पे होता है, because large population from the rural areas, they choose to live in the urban areas because of the lifestyle, because of the education, because of job opportunities, and because of so many n number of reasons. अभी क्या हो रहा है, at current times we see urbanization जो है ना वो काफ़ी फास्टर पेस पे अभी हो रहा है कि नहीं. सो इट इज नाउ एस्टिमेटेड दैट बाय 2030 40.76% population will reside in the urban areas alone. ठीक है. सो बट द वर्स्ट थिंग इज दैट अर्बन प्लानिंग मशीनरी जो होता है ना, जो यहाँ पे टाउन प्लानिंग करता है, या मान लीजिए जो यहाँ पे अर्बन प्लानिंग अथॉरिटीज जो है, सो दैट पर्टिकुलर मशीनरी हैज़ नॉट इवॉल्व एट द पेस ऑफ अर्बनाइजेशन. और आप कह सकते हो कि जिस तरीके से जो इनोवेशन एडवांस हो रहा है या टेक्नोलॉजी जिस रेट पे इन्हेंस हो रहा है उस रेट पे लेकिन अर्बन प्लानिंग नहीं हो रहा है. तो हेंस सच अनप्लान्ड डेवलपमेंट along with the climate change are driving many tragic events including urban flooding requiring some serious attention. ठीक है. सो इन दिस रिपोर्ट ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे लाइव्स लॉस होते हैं. दैट इज इन 2005 यहाँ पे देखिए जो अर्बन फ्लड्स है, दिस हैज ऑकर्ड प्रीवियसली ऑल्सो इन द केस ऑफ कोची, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड गुवाहाटी में. आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट केस में गुवाहाटी ऑफन फेसेस दिस फ्लड्स, है कि नहीं. सो एवरी मानसून सीजन आपको पता ही होगा कि द मोस्ट ऑफ द सिटी क्या होता है, वो पानी के अंदर ही रहता है. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2005 मुंबई में 450 लाइव्स वर लॉस्ट, देन 2000 में हैदराबाद में 142 लाइव्स वर लॉस्ट. सो दिस थिंग्स आर, आप कह सकते हो कि अर्बन फ्लडिंग यू कैन से इट इज कॉजिंग कैटास्ट्रॉफिक डैमेज टू दी सिटीज, मोस्ट ऑफ द अर्बन सिटीज वी कैन से. सो व्हाट कॉजेज दिस अर्बन फ्लडिंग? अब अगर आप ये कॉजेज के बारे में बात करोगे, यू कैन ग्रुप द कॉजेज into two major types. तो पहला हो जाता है आपका नेचुरल फैक्टर्स और दूसरा हो जाता है आपका एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. बट वन थिंग इज दैट अब जब ये नेचुरल फैक्टर्स आप जब देखोगे, यू विल एक्चुअली कम टू नो द नेचुरल फैक्टर्स आर ओनली एन आउटकम ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. आई होप यू नो व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, द मैन मेड फैक्टर्स. ठीक है. बिकॉज जितना भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, जितना भी हम जिसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ह्यूमंस का ही आप कह सकते हो कि ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ठीक है. सो इन नेचुरल में देखिए, द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन एज क्लाइमेट चेंज. सो अनटाइमली रेनफॉल, देन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म्स. तो साइक्लोन के बारे में आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल इन 2020 में आया था साइक्लोन अम्फान. तो अम्फान ने क्या किया था, इट फ्लडेड द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता. सो विद इन ईस्टर्न इंडिया ओनली द स्टॉर्म किल्ड सम 98 to 100 people, and it also caused a loss of about $13.8 billion. ठीक है. एंड उसके बाद एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मानसून हैज़ बिकम फ्रीक्वेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल.
तो देखिए मानसून इज बिकम फ्रीक्वेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल, मतलब दिस हैज बीन सेड एज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट चेंज ओनली. सो नॉर्मल मानसून जो है ना, इफ यू हैव स्टडीड द जियोग्राफी, अगर आपको इंडियन क्लाइमेट के बारे में पता है, देन यू वुड नो दैट नॉर्मल मानसून जो है, द टाइम पीरियड फॉर नॉर्मल मानसून केस ऑफ इंडिया, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून जब कहते हैं, इट इज फ्रॉम जून से लेकर सितंबर तक. बट नाउ इट इज सीन टू डेविएट इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर. कभी पहले होता है, कभी देर से आता है, कभी जितना हम लेवल ऑफ मॉइस्चर एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम आता है, कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है. So these are the factors which are an outcome of what? Climate change only. But climate change अगर आप देखोगे, it is indirectly an outcome of the human or the anthropogenic causes only. उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर है, देर इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल. तो यहाँ पे यही कहा गया है, देर इज इन चेन्नई द रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर टेबल अक्रॉस द सिटी आफ्टर रेन्स बिकम अ चैलेंज फॉर सेवरल बिल्डिंग्स विद बेसमेंट्स. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन केस ऑफ द राइजिंग ग्राउंड वाटर लेवल, ये कब होता है? इट नॉर्मली हैपेंस ड्यूरिंग द टोरेंशियल डाउनपोर्स के टाइम में होता है. And then the meteorological factors, so the same thing only, heavy rainfall, cyclonic storms and thunderstorms cause water to flow quickly through the paved urban areas and impound in low-lying areas combined with the anthropogenic factors. So in a nutshell, we can say rainfall is the torrential downpours is the most significant cause of flooding. So let's look at the factors caused by human, that is the anthropogenic factors. अब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में यहाँ पे दिया गया है, द फर्स्ट वन इज अबाउट द एनक्रोचमेंट. सो अ लार्ज नंबर ऑफ वेटलैंड्स दैट सोक्ड अप द रेन वाटर्स एनक्रोच्ड. ठीक है, बेंगलोर में ही आप देखोगे, इन दिस रिपोर्ट ओनली ये कहा गया है इन दिस न्यूज आर्टिकल दैट बेंगलोर यूज्ड टू हैव 262 लेक्स इन द 1960s. लेकिन अभी बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द ह्यूज कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या हो चुका है, ओनली 10 ऑफ देम आर स्टिल देयर विच कैन होल्ड वाटर. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर, ओइंग टू द माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, जॉब एस्पायरेंट्स एंड मोर फ्रॉम वेरियस अदर प्लेसेस, नाउ दिस हैज लेड टू द इंक्रीज इन द रिक्वायरमेंट ऑफ हाउसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हिच हैज इन टर्न लेड टू द एनक्रोचमेंट ऑफ द नेचुरली सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ लैंड लाइक द वेटलैंड्स. ठीक है, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा है, अभी ये सब जो वेटलैंड्स है उनका एनक्रोचमेंट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है अबाउट द रैपिड एंड अनप्लान अर्बनाइजेशन. सो इन बेंगलुरु द स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वेर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स वाटर बॉडीज. व्हाट इज स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स? अब स्टॉर्म वाटर होता है विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेल्ड स्टॉर्म वाटर, इज वाटर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रेसिपिटेशन. ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन से जो आता है, हैवी रेनफॉल से जो आता है, तो उसी को कहा जाता है, मान लीजिए फ्रॉम हेल हो गया, फ्रॉम स्नो हो गया, सो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन जो आता है उसी को स्टॉर्म वाटर कहते हैं. So the storm water drains were not directly connected to its water bodies. So in some places the runoff water was flowing into constructed deviation canals. The CAG found, that is the Comptroller and the Auditor General का report था, it found that this increased the chances of flash floods. All right. ठीक है, उसके बाद बताया गया about destruction of mangroves. Mumbai lost about 40% of its, मैंने बताया था about the 2005 floods of Mumbai. तो यहाँ पे बताया गया है कि मुंबई लॉस्ट अबाउट 40% ऑफ इट्स मैनग्रोव बिटवीन 1995 टिल 2005. नाउ दिस आर सम ऑफ द वर्स्ट एस्पेक्ट्स अबाउट अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि अगर अर्बनाइजेशन नहीं है देन डेफिनेटली अ कंट्री और अ नेशन वुड नॉट बी एबल टू ग्रो ओनली. बट देन अगेन दिस आर सर्टेन नेगेटिव एस्पेक्ट्स अबाउट अर्बनाइजेशन दैट वी गेट टू सी. सो मैनग्रोव्स क्या होता है, दे आर फाउंड दैट द इंटरफेस बिटवीन द मैराइन एंड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सपोर्ट यूनिक फौना एंड फ्लोरा, आप कह सकते हो, विद हाई बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग हैबिटेट, नर्सरी, शेल्टर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, एंड फीडिंग एरियाज फॉर वेरियस एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, देन फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, श्रिम्प्स. तो दिस थिंग्स आर फाउंड इन द मैनग्रोव्स. लेकिन मुंबई के केस में 40% हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रक्टेड इन दिस शॉर्ट पीरियड. ठीक है, उसके बाद पुअर सिविक मैनेजमेंट ऑफ वाटर ड्रेनेज, द कैग रिपोर्ट एज आई टोल्ड यू लास्ट ईयर का, सो इट पुल्ड अप बेंगलुरु म्युनिसिपैलिटी फॉर दिस पुअर मैनेजमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे उनको ब्लेम किया गया है फॉर द पुअर रिप्रेजेंटेशन और फॉर द पुअर टैकलिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स. उसके बाद lack of data. So the CAG report also found that the Bengaluru municipality did not maintain proper records of the management fund allotted to it under the JNNURM. So JNNURM, it stands for Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. So this is a massive city modernization fund जो सेंटर से प्रोवाइड होता है. अब ये जो मॉडर्नाइजेशन या जो अर्बनाइजेशन के लिए जो ये फंड जो आता है सेंटर से, ना ये फंड किस तरीके से यूज हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ है, या यहाँ पे कहा गया है कि किस तरीके से मैनेज हुआ है कि मिसमैनेज हुआ है, तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया गया है. सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच हैव बीन फाउंड बाय द कैग रिपोर्ट. So now that we have seen the causes, now let's look at the impact of the urban flooding.
सो इम्पैक्ट में डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा, प्रॉपर्टी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होगा। स्पेशली आपने शायद देखा होगा रिसेंटली आसाम में जो फ्लड हुआ था, वहाँ पे रेलवे लाइन में इन द केस ऑफ दिमा आसाम में बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड, बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग, यहाँ पे जो रेलवे लाइन था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। सो दिस इज डेफिनेटली वुड बी अ लॉस टू दी रेलवे, राइट। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज होता है, and then loss of life and property. So major cities in India have witnessed, I told you only through this report, that during the event of flood कितना lives and property loss होता है, ठीक है। उसके बाद some health hazards are also associated with the urban floods. For example यहाँ पे diarrhea, cholera, so these are the diseases, especially after the floods। यहाँ पे आप देखोगे जब flood यहाँ पे जो water level जब कम होने लगता है, then this number of diseases it starts to rise up, ठीक है। For example diarrhea and cholera, now these are waterborne diseases. Now some remedial measures, how can this flood be tackled, this urban flooding can be tackled. So the first important thing is about the holistic engagement. So in holistic engagement में ये कहा गया है कि it cannot be contained by the municipal authorities alone. The metropolitan development authorities, the national disaster management authorities जिनको NDMA कहा जाता है, उसके बाद the state one that is SDMA, then state revenue and irrigation departments along with the municipal corporation should be involved in such a coordinated manner so that this problem can be tackled effectively, ठीक है। Then developing sponge cities. अब ये जो sponge cities है ना, the idea of sponge city is to make cities more permeable. I'll try to explain this concept of sponge cities. अब देखिए sponge cities क्या होता है, sponge आपको पता है कि absorbs water, करता है ना, absorb water। तो ये sponge city is like a sponge only, it is designed to absorb the rain water for future use. So sponge cities are designed with infrastructure to soak as much water as possible during the रेनफॉल पीरियड, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड यहाँ पे क्या क्या रहेगा, एक सिटी में इन द केस ऑफ स्पॉन्ज सिटी में यहाँ पे बनाया जाएगा स्टोरेज टनल्स रहता है, देन ह्यूज एरियाज ऑफ वेटलैंड रहता है, सो दिस विल एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। सो दे नॉट ओनली आर एफिशिएंट ड्यूरिंग द वेट सीजन, बिकॉज ड्यूरिंग द वेट सीजन आई टोल्ड यू कि इट एब्जॉर्ब द वाटर, बट दे आर ऑल्सो एफिशिएंट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स और ड्यूरिंग ड्राउट व्हेन दे एक्ट एज सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। सो दिस द कंसेप्ट ऑफ स्पॉन्ज सिटीज। ये सब ना अपने आंसर में लिखना जरूरी है, दिस विल हेल्प यू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर मार्क्स out of your answers, ठीक है। Then vulnerability analysis. So vulnerability analysis and risk assessment should also be a part and parcel of the city master plan. That is किस जगह में कितना रिस्क है, ठीक है, और उस जगह पे किस तरीके से जो यहाँ पे हाउसिंग वगैरह किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। So these things should also be kept in mind while like conducting the urban planning, ठीक है। And this is a mains practice question that I have shared in today's session. Usually I give you a prelims practice question. For the first time I have given you a mains practice question. If you find time, I would request you to write an answer, at least even if it is not a proper answer, at least attempt कीजिए। तो इससे क्या होगा ना, it will ensure कि आप मतलब ये जो whatever you have understood from this article, so try to implement in the answer. And let me tell you one thing, without writing answer you will not be able to get through the civil service examinations. Now the next article is about India-Bangladesh relations. Now this article is based on the recent visit of Bangladesh PM Sheikh Hasina, who had recently come to India. तो उन्होंने मीटिंग किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, तो इसी में they have signed 7 pacts, ठीक है। तो ये 7 pacts क्या क्या है, that every pact is not that important, but let me tell you that those pacts were mostly, obviously they will be focused on communication, about the water sharing के बारे में, साइंस के बारे में, तो ये सारा चीज़ों के बारे में they have signed some pact, some memorandum of understanding, ठीक है। Now this article से हम ये जानेंगे कि ये visit में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं, and also we'll try to learn some very important facts and figures about the Indo-Bangladesh relations, ठीक है। Now this article is going to be very important from GS paper to international relations point of view, and also this article has been taken from the Indian Express, okay। So this every यहाँ पे जो भी information है ना, this is about the recent visit of Bangladesh PM Sheikh Hasina to India, और ये जो MOU जो साइन हुए हैं, जो ये पैक्ट साइन हुए हैं, दिस आर रिलेटेड टू दी वाटर शेयरिंग के बारे में, रेलवेज के बारे में, स्पेस के बारे में, साइंस के बारे में, जुडिशियरी के बारे में, ठीक है। तो दिस आर्टिकल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, आई विल टेल यू। 2 कारण की वजह से आई एम लाइक हाईली पॉजिटिव कि ये इस बार आने वाला है, बिकॉज द फर्स्ट वन इज दैट बांग्लादेश इन द लास्ट ईयर इट इज कंप्लीटेड 50 years ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो एज अ कंट्री दे हैव फाइनली
that they finally completed 50 years of independence from Pakistan. So this is one reason. And second reason is that the same last year, last year in May, it also marks the completion of 50 years of strong bilateral ties between India and Bangladesh. Because India is the first country to acknowledge Bangladesh as a separate nation, and hence India, आपको पता ही होगा कि India also played a vital role in the liberation of Bangladesh in the period of 1970 to 71. Okay, so hence we can expect at least one question from the relation between the two countries in the upcoming examination. So let's see about it. So first, let's look at the significance of the relations between India and Bangladesh. So Bangladesh का जो लैंड बॉर्डर है दिस इज शेयर्ड विद इंडिया. ठीक है, आप देखोगे तीन साइड से, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ साइड इट हैज बीन बाउंडेड बाय इंडिया अलोन, एंड ऑन वन साइड इट इज ओपन टू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, सो इंडिया एंड बांग्लादेश इट शेयर्स अ boundary of about 4156 kilometer of border है, which is the longest and the largest this is the longest land boundary that India shares with any of its neighbors. ठीक है, इसके बाद आता है चाइना के साथ. So India was the first country to recognize Bangladesh as a separate and independent state and establish democratic relations with the country immediately after its independence in December 1971. India is the first country. So we can say it is also the golden jubilee of Indo-Bangladesh relations. This is the reason why I am saying कि यहाँ से क्वेश्चन आने का chances बहुत ज़्यादा है. So Bangladesh occupies a key place in India's neighborhood first policy. What is this neighborhood first policy? It is a part of India's foreign policy only that actively focuses on improving ties with India's immediate neighbors like Bangladesh हो गया, Bhutan, Nepal, Myanmar, etc. So it was started by PM Modi during his first tenure itself. Okay. So India's link with Bangladesh are cultural, social and economic. There are a lot of common things between India and Bangladesh. We will see that in the case of the languages, we will see in the case of the food habits हो गया. So everything में यहाँ पे ना India and Bangladesh में बहुत सारा common. पता है क्यों? This is because we once belonged to the same nation India only. ठीक है, Bangladesh was very much a part of India. बाद में जाके it joined Pakistan as East Pakistan, and finally it became a separate nation, that is Bangladesh. So there is much that unites the two countries, a shared history, जो कि मैंने अभी कहा था, and common heritage, linguistic and cultural ties, passion for music, literature and the arts. ठीक है, तो shared history अगर आप देखोगे, both the countries belong to one nation only before independence. So we even had the same struggle for the freedom against British rule. हमने साथ में ही fight किया था, right? So उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर created the national anthem for both India and Bangladesh. So national anthem of India आपको definitely पता होगा जन गण मन, और बांग्लादेश के केस में it is अमर शोनार बांग्ला. ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है लेकिन, ठीक है, everything good definitely has something bad also. तो यहाँ पे कहा गया however, ठीक है, ये टर्म बहुत डेंजरस है, however. ठीक है, यहाँ पे सब ठीक था लेकिन यहाँ पे आ गया however, there still remains major issues such as river water dispute. ठीक है, जैसे कि Teesta river water sharing, I'll tell you about it. Aiding illegal immigrants, आपको पता ही होगा कितना बांग्लादेशी people live in India because of their job and whatever. ठीक है, and drug trades remain between India and Bangladesh. अब देखिए drugs इसीलिए यहाँ पे बांग्लादेश and India में काफ़ी prominent क्यों है, काफ़ी फैला हुआ इसीलिए है because Bangladesh and India, both this country are very near, are very close to the Golden Triangle. अगर आपको Golden Triangle के बारे में नहीं पता है, then it is basically एक drugs का एक triangle है. ठीक है, तो the Golden Triangle countries which produces high quantities of opium. दो जगह है, एक हो गया आपका Golden Triangle और दूसरा हो गया आपका Golden Crescent. ठीक है, ये दो important है. तो इसी केस में अब ये सारा जो चीज़ है ना, इनको एड्रेस करना है. ठीक है. So let's look at the relation between India and Bangladesh. So the economic ties first. The geographical proximity of India to Bangladesh has made it one of the biggest trading partners. So currently, India and Bangladesh are one of the biggest trading partners. So Bangladesh is at the sixth largest trade partner of India. India has provided duty-free quota-free access to Bangladesh on all tariff lines except on tobacco and alcohol under the SAFTA, that is South Asian Free Trade Agreement, since 2011. So whatever Bangladesh exports to India, यहाँ पे जो भी बांग्लादेश इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, except for tobacco and alcohol, they don't need to pay custom duties, as both are members of a free trade agreement known as SAFTA.
The bilateral trade between the two countries have jumped to $18.2 billion in 2021, that is in the last year, as compared to 10.8 billion in the previous year. तो इस बार 18.2 billion is the current year. तो यहाँ पे काफ़ी एक increase हुआ है. So the bilateral trade figures जो है ना, ये numbers important इसीलिए है, directly आपको नहीं पूछेगा. This can be used in your answers to enhance it and make your answers more factual and hence marks fetching. Then sharing of the 6 border huts, 4 in Meghalaya and 2 in Tripura, have been approved by the Indian and the Bangladesh governments. So border huts देखिए पहले से ही था. So border huts, India and Bangladesh have several border huts होते हैं across the border. So these are basically markets, rural markets. ठीक है. So these rural markets aims at promoting the well-being of the people dwelling in remote areas across the borders of the two countries. ठीक है. तो it seeks to establish traditional system of marketing local produce, that is यहाँ पे across the borders जो भी villages है, वो जो भी अपना local produce है ना, तो वो जाके वो border हद में जाके वो बेचते हैं. So the people from the other side, they come, they sell their product or they purchase this product from the other side through cash or according to barter basis. You know, कभी barter में क्या होता है, सामान के against सामान दिया जाता है. उसके बाद आता है सो बेसिकली जो बॉर्डर हट वाला अरेंजमेंट है, दिस इज ऑल्सो यूज टू प्रमोट पीस अलोंग द बॉर्डर्स. ठीक है. And the sharing of the river waters, India and Bangladesh share 54 common rivers. The Ganga Water Treaty signed in 1996 for sharing of waters of river Ganga during the lean season. Lean season कब से कहाँ रहता है? जनवरी से मई तक रहता है. So most recently यहाँ पे साइन हुआ है the Kushiara Pact was signed, which will also benefit people in India, that is in southern Assam and this district in Bangladesh. So this is about the Kushiara Pact. This is based on the river Kushiara. So let's look at the major irritants or the issues between India and Bangladesh. सबसे important है the Teesta River dispute, okay, which is often the cause of the bitterness in the relationship between India and Bangladesh. So the Teesta River, it flows from India to the Bay of Bengal through Bangladesh. Okay. Almost half a dozen districts in West Bengal are dependent on this river. Bangladesh complains that it does not get a fair share of the water. Okay. So the reason they do not get a fair share is said to be over usage of water by West Bengal. But because the water जो है ना, water India के case में it is a state subject, the center is not being able to reach on a conclusion or any such solution because of the lack of coordination among the central and the West Bengal state government. ठीक है. इसके बाद illegal migration, you all know about this illegal migration issue from Bangladesh to India, which includes both refugees and economic migrants, continues unabated. The large influx of such migrants across the boundary has posed serious socio-economic or political problems for the people of India, especially for the states of Assam, West Bengal, Mizoram, Meghalaya, Tripura, and I think Arunachal Pradesh as well. Okay. So migration from Bangladesh mainly for job, they come for job opportunities. Okay. And you'll find that most of the laborers working in various organizations around Northeast, especially Northeast and in general India ke case mein, are Bangladeshi nationals only. The Rohingyas are also, you'll find they are also who are actually camping as refugees in Bangladesh. Now they're also entering India illegally in search of a better standard of life. Okay. उसके बाद I was saying about the drug smuggling and the trafficking issue. अब देखिए, I was saying कि India and Bangladesh, they both are close to the Golden Triangle. So this Golden Triangle में members है Myanmar, Thailand and Laos. और Golden Crescent जो मैं कह रहा था, it is on the western side. तो वहाँ पे members है Iran, Pakistan and Afghanistan. Now this Golden Crescent and the Golden Triangle जो है ना, now they are very infamous for the huge produce of opium, then heroin जैसे drugs के लिए, for the production and as well as for the smuggling of the drugs के लिए ये जो गोल्डन क्रिसेंट है एंड गोल्डन ट्रायंगल है, ये काफ़ी जाने जाते हैं. ठीक है. सो देयर हैव बीन मैनी इंसिडेंसेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग. ठीक है. एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन का आर ट्रैफिक, देन वेरियस एनिमल एंड बर्ड स्पीशीज आर अप्रोच्ड टू दिस बॉर्डर्स. देन ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश एट प्रेजेंट इफ यू सी. तो अभी देखिए क्या होता है, या जो Bangladesh है, it is an active partner in the Belt and Road Initiative. In one of the previous sessions, I have spoken about the BRI of China. जो ये Belt and Road Initiative है चाइना का, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, but Bangladesh is very much an active partner in it. Also, Bangladesh imports Chinese military equipment, including submarines in the defense sector, that is major concern for India's national security.
ठीक है. So it is also a threat that too much issues in the Indo-Bangladesh relations. अगर मान लीजिए कि if there is a rise of issues in between India and Bangladesh, no, it may get Bangladesh closer to China. ठीक है. तो China has already seen to make huge investment in Bangladesh, which may also be a part of China's debt trap policy. जहाँ पे वो लोन देते हैं और वो कंपनी को फाइनेंशियल मतलब बाद में क्या होता है दैट कंट्री नीड्स टू फेस फाइनेंशियल इश्यूज. फॉर एग्जांपल आप देखोगे क्राइसिस हुआ है इन केस ऑफ पाकिस्तान एंड श्रीलंका. सो बांग्लादेश के साथ इसीलिए अपना जो रिलेशन है वो काफ़ी सही तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. Now, what are the way forward or the remedies that are suggested here? तो यहाँ पे कहा गया है about addressing the teesta. I told you one of the major irritant or the major issues between India and Bangladesh is this teesta river water dispute. अब ये कैसे solve होगा? ये तब solve होगा जब Indian government and West Bengal government जब एक coordinated manner में जब एक coordinated fashion में आपस में बात करेंगे और इसके बारे में जब एक यहाँ पे common solution लाया जाएगा. ठीक है? Because अब ये जो teesta river dispute है ना इसीलिए है because there is no coordination among the state government of West Bengal and the center because they are of different parties. ठीक है. लेकिन यहाँ पे कीपिंग aside the differences, this issue should be resolved so that our ties with Bangladesh get even better or enhanced. ठीक है. And then better connectivity, there is a need to enhance connectivity in the region through यहाँ पे coastal connectivity हम कर सकते हैं through ships and vessels and then roads, rails and inland waterways. Energy security, now see the global with the growing requirement of power for all purposes, India and Bangladesh can cooperate to find new ways of energy conservation and also to ensure shifting to clean and green energy. This is a prelims practice question. Please answer in the comment section. The next article is about the establishment of the National Center for Disease Control in Arunachal Pradesh. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 6 न्यू ब्रांचेस. यहाँ पे ब्रांच खोला जाएगा in Arunachal Pradesh of the National Center for Disease Control, including one in Arunachal Pradesh. Now this can be important. The information about this center can be cited as initiative by the government in the health sector. If a question is asked from GS paper to governance or the issues relating to health, or if an essay is asked about the health infrastructure in the state. This article has been taken from the Arunachal Times. So the Union Health and Family Welfare Minister Mansukh Mandavia in this month laid the foundation stone for the establishment of 6 new branches of the NCDC, one coming up in Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh में कहाँ पे होगा? This is going to be set up at Holongi. 3-acre land has been proposed, has been approved and allocated for this purpose, and this will be executed by the Central PWD and is expected to be completed within the 2 years. आने वाले 2 साल में this project is expected to be completed. So the major infrastructure यहाँ पे क्या क्या रहेगा? The branch will have an epidemiology and microbiology sections and conference hall, laboratory and residences for the staffers. So this is the picture. This is the proposed site. Here you can see Dr. Jampa. Dr. Jampa is the state surveillance officer. So he is in with his team in this proposed site at Holongi. About the NCDC, let's see NCDC के बारे में what is this NCDC is all about. It is ये formally इसे कहा जाता था National Institute of Communicable Diseases NICD. ठीक है. और उससे भी पहले इसे कहा जाता था Central Malaria Bureau. Now this Central Malaria Bureau was established during the period of British India only back in the year 1909 for the purpose of observation and study of communicable diseases. कि how to prevent the communicable diseases, how to control them in the country. तो इसी के लिए ये सेटअप किया गया था in 1909. कहाँ पे? कसौली in हिमाचल प्रदेश में. NICD, that is the National Institute of Communicable Diseases, was transformed into the NCDC. कब हुआ है ये? 2009 में इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है. ठीक है. So it functions as a nodal agency in the country for disease surveillance and then facilitating prevention and control of communicable disease. This is the primary task of it. It is also a national level institute for training specialized manpower भी यहाँ पे ट्रेनिंग किया जाएगा, especially for the health purposes, then for the laboratories and also for the entomological services. उसके बाद यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. द इंस्टीट्यूट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही है. अब यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक बात यहाँ पे ये भी है कि ही हैज़ नॉट लाइक पर्सनली विजिटेड होलोंगी और अरुणाचल प्रदेश. ये जो 6 जो ब्रांचेस है ना, इनको उन्होंने वर्चुअली ओपनिंग किया है. ठीक है. दैट इज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से. अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली पे है. देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन गिवन फ्रॉम दिस सेक्शन. काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about a festival again from Arunachal Pradesh. There is Pam Kho Sowai festival.
ठीक है. अब ये जो पाम खो स्वाई फेस्टिवल है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट. ये रिसेंटली ये सैटरडे को ये सेलिब्रेट किया गया था. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड ऑन अरुणाचल प्रदेश कल्चर फ्रॉम जीएस पेपर 1 एंड ऑल्सो व्हाइल राइटिंग एन एसे सच इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में आप बता सकते हैं विच बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स. अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा ऐसे आया है अबाउट द हेरिटेज, अबाउट द कल्चर, अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिस थिंग शुड बी रिटन अबाउट. This Pam Kho Sowai festival has also been taken from the Arunachal Times only. This festival is a harvest festival of the Bugun tribe का festival है ये, ठीक है. So which was celebrated on in the West Kameng district on Saturday. The festival is celebrated as tribute to mountains and water. तो mountains and water को Bugun tribe क्या कहते हैं? It is mountains को कहा जाता है farm and Kho is the water, ठीक है. और ये माना जाता है कि mountains and water, which obviously is, they are vital components for human survival. The celebration here was attended by the Dirang MLA Furpa Sering, then Bomdila MLA Dongru Songja, then Kalaktang MLA Dorji Wangdi Kharma, then Trigino MLA Kumsi Sidiso, and West Kameng DC Karma Leki. So this was the person, the guest of honors who were present in the celebration of this Pam Kho Sowai festival. Based on this topic only, I have given you a prelims based questions. So kindly answer this in the comment section. Now coming to the questions that I have asked in the previous video, let's see what the answers are. So the answers are, okay. So आप देख सकते हैं कि which of this following HDI के बारे में बताया था. HDI में there are 3 dimensions are there. The first dimension is life expectancy, education, per capita income, and no, social inequality is not a dimension of the HDI. ठीक है. उसके बाद HDI के बारे में, it is a composite index that measures the average achievement in the country in 3 basic dimensions. Yes, these are the 3 basic dimensions A, B, and C. The basic dimensions are a long and a healthy life, knowledge, and a decent standard of living. Yes, both 1 and 2 are the correct answer. उसके बाद which countries are separated by the McMahon land? It's a very controversial land because it is accepted by India but not accepted by our neighbor, that is China. So yes, it is a line between India and China. So currently that was all from my side for this session. We'll meet in the next one. Thank you so much for joining, and bye bye and take care.